दिया हमने उसका वो भी देख लिया कि कैसे वैरी करने से क्या उस पर असर पड़ता है, क्या फ़र्क होता है, हाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज्ड और ऑल्टर्ड. बट द थिंग इज दैट हाउ इट इज़ डन. ठीक है, फॉर दैट पर्पज वी गो फॉर control using this rectifiers. So you can have two types of supplies. अभी हम दोनों तरह की बात करेंगे. You can have an AC supply and you can also have an DC supply. ठीक है, both the things are possible. If you have an AC supply, in that case, what happens is that you will have to uh, convert it into DC. ठीक है, तो अगर आपको इसे डीसी में कन्वर्ट करना है तो उसमें क्या होगा कि यू रिक्वायर ए rectifier, and on the other side if you have a, just wait for a minute. Okay, if you have a AC supply, in that case you require a rectifier to convert it into DC and then make a suitable DC such that you can run a DC motor. But you require a variable DC at the terminals of the DC motor. So that is why, to feed the armature. So that is why you go for a controlled rectifier. Okay, you can have a possibility of using a controlled rectifier. You can also use an uncontrolled rectifier fed from a auto transformer. ठीक है, तो आप ट्रांसफार्मर की से जो है वो इनपुट वोल्टेज जो है वो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर की वैरी करें और फिर उसके बाद जो है वो एक वेरिएबल डीसी आउटपुट दे सकता है आपको. दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी व्हाट यू कैन हैव. ठीक है, तो इसमें डिसएडवांटेज बीइंग दैट द सिस्टम बिकम्स बल्की क्योंकि आपको एक ऑटो ट्रांसफार्मर लेना है. ठीक है, बट द सिस्टम बिकम्स क्वाइट एसेसेबल एंड मेंटेनेबल because generally uncontrolled rectifiers are very easy to maintain. They do not require anything unless and until they are made up of diodes and few filters. And the second thing is that even an auto transformer is quite a robust system, so you don't require maintenance for it. And on the other side, when you have a controlled rectifier, in that case, you require a particular type of firing. You need to vary that. You require a firing circuit, and all these things are to be taken care of. ठीक है, तो उसके हिसाब से the circuit becomes a bit complex, and but it is still, it requires a very lesser space and it is quite precise in terms of that. So that is why we generally prefer to go for controlled rectifiers. On the other side, if you have a DC supply and you want a variable DC at the terminals of the output, you use choppers for it. Okay. So here we'll consider both the options. The first option, when we have an AC, we will use a controlled rectifier and have a variable voltage available at the terminals of the motor and the DC motor. And the second thing is that if we have a DC supply, in that case we will use a chopper to have a variable voltage at the terminals of the DC motor. Okay. So the first one that comes is controlled rectifiers when we have the AC supply. So when we talk about rectifiers, you must have seen in case of you must have studied in power electronics that we can have a single phase rectifier and we can have a three phase rectifier, and there are certain advantages of having a single phase rectifier and there are certain advantages of using a three phase rectifier. Obviously, when the power requirements of the output is large or the motor put at that rectifier is large, in that case what happens is that you require a three phase supply because single phase supply से अगर आप इतना ज़्यादा लोड लेंगे तो it may create unbalancing in the remaining phases. ठीक है, तो
It is generally not advisable to use single phase rectifiers beyond 5 किलोवाट और सो. ठीक है, आजकल तो 2 किलोवाट के बाद भी जो है हम ये इस्तेमाल करने लगते हैं. ठीक है. नाउ तो द थिंग इज दैट you can, if you have an AC supply, you can have two, you can use it in two ways. First, you can use a single phase AC supply fed to a single phase fully controlled or half controlled rectifier. फुल्ली कंट्रोल्ड और हाफ कंट्रोल्ड दोनों की बात आपने ये वर्ड सुने होंगे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में. ठीक है, अभी इसे एक्सप्लेन भी करेंगे थोड़ा सा. Then if you have a three-phase rectifier, that means that you have an input of three-phase AC and the output is DC. In that case, again you can have a fully controlled and a half-controlled rectifier. ये दोनों चीज़ें possible होती हैं इसमें. ठीक है, there are certain advantages of having full converters and there are certain advantages of having half converters. दोनों के अपने अपने advantages हैं और disadvantages भी हैं. ठीक है. So first we start from the very first one is the single phase fully controlled rectifier. ठीक है. So when you have a single phase fully controlled rectifier, in that case what happens is that ये है आपके पास. ठीक है. This is a single phase fully controlled rectifier, very well known circuit to you. The thing is that the output of this is converted to the armature of the DC motor. Now, how the motor behaves with this? Okay. The very first thing is that when we see the characteristics of this converter on the IAVA plane, in that case, that means the output voltage and the output current. So what we find is that you can have both the directions of both the polarities of supply available at this say can be made available at this these terminals. यानी ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये जो अपर वाला टर्मिनल है और नीचे वाला नेगेटिव. एंड इवन यूजिंग द सेम सर्किट यू कैन आल्सो हैव a positive at the lower positive terminal at the lower end and the negative terminal at the upper end. यानी ये जो आउटपुट्स हैं इसके ये इंटरचेंज करे जा सकते हैं पोलैरिटी के टर्म्स में, बट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड इन दिस. ठीक है, क्योंकि अगर आप इसमें डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऑल्टर करेंगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में लगे हुए मिलेंगे आपको. Then you have, this is known as a single phase fully controlled rectifier because these are all switches that can be fully controlled. That means that they have gating circuits in which you can have a desired firing at any time. ठीक है ना. तो ये सारे जो आपके पास स्विचेस हैं, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिए, ये हम पूरे इसमें इस्तेमाल करेंगे कि that when we talk about any converter circuit, we say them as switches. ठीक है. थायरिस्टर्स लिखा होता है बहुत सी जगह पे, जैसे आप इस वाली बुक में भी देखें जो जिसका हम ये दिखा रहे हैं तो थायरिस्टर्स लिखा हुआ है. थायरिस्टर इज अ वेरी जनरल टर्म. ठीक है. एंड द वर्ड switch thyristor can be very interchangeably used. ठीक है, because thyristor as itself is not very much used these days because you have a number of modern switches. जैसे आपके पास IGBTs होते हैं, ठीक है, और GTOs होते हैं और MCTs होते हैं, मॉस कंट्रोल्ड थायरिस्टर्स होते हैं. ठीक है, और उसके बाद कन्वेंशनल टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉसफेट्स भी होते हैं. ठीक है. तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट रेटिंग्स और डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से इस्तेमाल करी जाती हैं कन्वर्टर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द स्विचिंग लॉसेस, द स्विचिंग रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, द रेटिंग ऑफ द वोल्टेज एंड करंट, द रेटिंग ऑफ द पावर डिसिपेशन और ट्रांजिएंट रिस्पॉन्सेस. ठीक है, कंट्रोल सर्किटरी, इन सब चीज़ों के बेसिस पे जो है हम वो स्विचेस इस्तेमाल करते हैं, ये जितने सारे मैंने आपको बताए हैं ये. ठीक है. तो ए वेरी मॉडर्न अप्रोच ऑफ दिस इज दैट वी कॉल ऑल दीज एज स्विचेस, यानी थायरिस्टर्स को, आप जीटीओस को, मॉसफेट्स को, बीजेटीज को और आईजीबीटीज को, एमसीटीज को, इनको सबको आप स्विच कहिए बिकॉज दे एक्चुअली वर्क एज अ स्विच. ठीक है. तो दिस इज नोन एज ए कंट्रोल्ड स्विच
एंड जो आपको अगर आप फिर उसे डायोड को लेंगे तो दैट इज नोन एज अनकंट्रोल्ड स्विच, बिकॉज यू कैन नॉट कंट्रोल द switching of that. As soon as it reaches a certain, it is forward biased by a certain voltage, it starts conducting. But आपके पास इन switches में क्या होता है, if you do not provide a gate or a base current, up till then, even though they are forward biased, even though they are above their say breakdown voltage, sorry, switching voltages, up till you do not fire them, they do not operate. ठीक है, so they are known as controlled switches and diodes are known as uncontrolled switches. ठीक है, तो हम इसमें पूरे सब्जेक्ट में जब हम बात करेंगे तो कुछ जगह थेरिस्टर्स भी हो सकता है बोलें, कुछ जगह हो सकता है स्विचेस ही बोलें. वैसे मैं आमतौर से आई प्रेफर टू यूज़ द वर्ड स्विच. तो whenever you use these switches, unless and until you particularly specify कि इस ऑपरेशन में हम यही इस्तेमाल करते हैं, जैसे चॉपर्स में है, चॉपर्स में वी प्रेफर टू यूज़ मॉसफेट्स फॉर सर्टेन एप्लीकेशंस. ठीक है, तो वहाँ पे बात हो सकती है कि मॉसफेट इस्तेमाल किया है, उसकी ड्रेन करंट है, ऐसी करके है. बट इट इज़ ऑलवेज सेफ टू यूज़ अ वर्ड स्विच दैट इंक्लूड्स ऑल दीज. ठीक है, तो वी हैव दीज. और यहाँ पे जो है अब ये बात, ये तो खाली उसकी बात हुई. सेकेंड थिंग इज दैट ये जो आपने सिंबल बनाया है यहाँ पे, ये भी थायरिस्टर का बनाया है. ओके, इट्स फाइन. सो यू कैन यूज ए सिंबल ऑफ ए स्विच सिंपली. जैसे आपके पास एक स्लैंट लाइन हो जो ओपन हो, ठीक है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड दैट इज़ अ बेटर वे ऑफ शोइंग इट. ठीक है, तो अलग अलग किताबों में अलग अलग होता है, बट ज़्यादातर मॉडर्न बुक्स में जो है वो आपके पास या मॉडर्न कंसिडरेशंस में जो है हम ज़्यादातर जो है वो एक स्लैंट लाइन से ओपन या ओपन स्विच दिखाते हैं. ठीक है, तो एंड दीज आर नॉट शोन लाइक दिस कि यहाँ थायरिस्टर है ये वो, बट स्टिल एट योर लेवल इट इज़ क्वाइट ओके कि आप उसे थायरिस्टर दिखाएं. आप उसमें गेट बना देंगे. ये जो टर्मिनल है, ये छोटा सा जो है, अगर आप इस टर्मिनल को बना देंगे तो दैट मीन्स दैट इट इज़ ए कंट्रोल्ड स्विच. और अगर आप डायोड में नहीं बनाएंगे से इट मीन्स दैट इट इज़ एन अनकंट्रोल्ड स्विच. तो स्विच जो टर्म वो जो है आपके पास दिखाने का तरीका जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, दैट व्हेन यू हैव टू शो इट एज ए कंट्रोल्ड स्विच और एज एन अनकंट्रोल्ड स्विच. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है. तो इसलिए ये वाला कन्वेंशन भी एट टाइम्स बेनिफिशियल रहता है दिखाने के लिए. ठीक है, तो you have this single phase fully controlled rectifier. All these switches are have a gate connected to it and have a gate terminal to them, so they can be controlled. So this is known as single phase fully controlled rectifier. Single phase क्यों? क्योंकि इनपुट इसका सिंगल फेज है. ठीक है, फुली कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि उसके चारों स्विचेस जो हैं वो फुली कंट्रोल्ड हैं. ठीक है, देन यू हैव अ सिंगल फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. हाफ कंट्रोल्ड में दो चीज़ें भी आएंगी. पहली चीज़ तो यही है कि बाय इंस्पेक्शन यू कैन सिंपली सी दैट you have two fully controlled switches and two uncontrolled switches. ठीक है, so that is why it is known as half controlled. ठीक है ना. The second thing is that single phase इसलिए कहलाता है क्योंकि ये this is a single phase source. Now if you see that this type of system can only provide a voltage of a single polarity. यानी ये पॉजिटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा. ये रिवर्स करी नहीं जा सकती इसकी पोलैरिटी किसी भी मीन से. यहाँ पे तो रिवर्स करी जा सकती थी अगर आप ये यहाँ की T1 की जगह आप पहले T2 चलाने लगे ऐसे करके. सो दिस कैन बी रिवर्स्ड लाइक दिस. बट इस केस में ये चीज़ नहीं करी जा सकती. सो एंड द करंट ऑब्वियसली फ्लोज इन वन डायरेक्शन. इसमें भी जो है आपके पास जो प्लेन ऑफ ऑपरेशन इन IAVA प्लेन कम्स आउट टू बी ओनली इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ठीक है, तो इसलिए भी हम इसे हाफ कंट्रोल कहते हैं. ठीक है, तो द थिंग इज दैट whenever there is a requirement of a single polarity and a single direction of current, in that case you always prefer to use half controlled rectifiers, even though the output is not very smooth as compared to a single phase fully controlled rectifier. But still the circuit is very less complexity is very much reduced. And also the second thing is that the cost is also reduced, because जो आपके पास T2 T3 लगे हुए हैं इसमें,
पहले वाले केस में, और जिसकी जगह आपने ये डायोड्स लगा दी हैं। ठीक है, तो ये डायोड्स जो हैं वो आपके पास काफ़ी कम कॉस्टली होती हैं, इनका कोई कंट्रोल सर्किट नहीं होता जैसे इसके लिए चाहिए। So this system is quite simple and cheap as compared to this one, single phase fully controlled. But the only disadvantage is that, and in most of the cases, when you have a smaller rating, you never require the polarity to be interchanged. Okay, so that is why this single phase half control rectifier works very fine when we consider small rating operations. Small rating operations में single phase भी अच्छा काम करता है आपका, because थ्री फेज में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लार्ज सिस्टम में यू ऑब्वियसली रिक्वायर अ थ्री फेज सिस्टम बिकॉज there would be a severe unbalancing at the input terminals of the on the AC side। ठीक है, वन थिंग ऑल्सो, यहाँ दोबारा मैं ये बता दूं कि ये आपके पास एक रेक्टिफायर है और ये आर्मेचर को फीड कर रहा है डीसी मोटर के। ये जो वाइंडिंग दिखाई हुई है ये एक फील्ड वाइंडिंग है उसकी। ठीक है, इसमें कोई कनेक्शंस नहीं दिखाए, यू कैन हैव डिफरेंट कनेक्शंस व्हाट एवर यू रिक्वायर। ठीक है, तो यू हैव नाउ व्हाट यू हैड, ये जो आपकी इक्वेशन थी जिसमें आपको V दैट इज द आर्मेचर वोल्टेज दैट वाज टू बी ऑल्टर्ड, दिस इज ऑल्टर्ड यूजिंग दिस सर्किट। ये पूरा सर्किट आप ऑल्टर करते हैं। V किसके अक्रॉस है? इन्हीं दो टर्मिनल्स के तो अक्रॉस है। ठीक है, तो नाउ विल बी एनालाइजिंग दैट हाउ द firing angle of these is going to alter the, or how the output voltage of this converter is actually dependent upon the type of control or say firing angle of your thyristor switches। ठीक है, the another possibility of having a DC output from an AC source is that you use a three phase AC source। ठीक है, या आप थ्री फेज एसी सोर्स इस्तेमाल करें तो इन दैट केस यू कैन हैव अगेन यू कैन हैव टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशंस। अगर आप थ्री फेज एसी सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको थ्री फेज फुली कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इस्तेमाल करना पड़ेगा। थ्री फेज इनपुट है तो दैट इज वाई दिस इज थ्री फेज। एंड फुली कंट्रोल्ड क्यों है? क्योंकि ये सारे स्विचेस जो आपके पास ये लगे हुए हैं और ये लगे हुए हैं, ये सारे स्विचेस जो हैं वो गेट कंट्रोल्ड स्विचेस हैं और फुली कंट्रोल किए जा सकते हैं। So that is why it is known as fully controlled. Again, the very same thing is that the direction of current cannot be reversed at the output terminals, but still the polarity of the terminals can always be reversed. So you can have an operation in two quadrants, first and the fourth quadrant of the IAVA plane। ठीक है, तो हियर यहाँ पे आपको कभी कभी ये ज़रूरत पड़ेगी, हम इसकी बात करके बताएंगे आगे चल के कैसे ज़रूरत पड़ती है इसकी। When you have large machines, you require this quadrant of operation at times। ठीक है, then again on the very same lines you also have a three phase half controlled। थ्री फेज तो सोर्स की वजह से हुआ, हाफ कंट्रोल्ड क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज स्विचेस आर डायोड्स। ठीक है, सो इफ दीज आर डायोड्स सो द कंट्रोल इज ओनली रिक्वायर्ड फॉर T1 T2 एंड T3 लाइक दिस। ठीक है, खाली इन्हीं तीन का कंट्रोल आपको लगाना पड़ता है। सो द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट इज वेरी मच रिड्यूस्ड, द कॉस्ट ऑफ द सर्किट इज ऑल्सो वेरी मच रिड्यूस्ड बिकॉज एक तो कंट्रोल सर्किटरी नहीं है नीचे वाले इनकी, और ये इटसेल्फ ये जो स्विचेस हैं ये इससे काफ़ी कम कॉस्टली हैं। एंड स्टिल यू हैव अबाउट टू द सेम आउटपुट विद द ओनली डिफरेंस दैट यू डोंट हैव अ फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन इन IAVA प्लेन। ठीक है, तो बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होती, तो you go for a lesser complex and costly mechanism to produce this variable output voltage at the armature terminals of a DC motor, and this works very well। ठीक है, तो फिर हम इसके अब एनालिसिस करके बताएंगे, अभी हम नहीं शुरू कर रहे हैं बिकॉज सेशनल भी आपके चलिए अगले हफ्ते, तो ये आ भी नहीं रहा है उसमें,
So we'll start from the after the sessions, after the midterm exam, that how the output varies, output of these. अब ये हमें ध्यान रखना है इसमें कि कन्वर्टर है, कन्वर्टर का जो आउटपुट है वो मोटर को फीड किया जा रहा है, ठीक है। तो अब ये देखना है कन्वर्टर का आउटपुट किस चीज से पे डिपेंड करता है, और दूसरी चीज ये हमें यहाँ पे क्या चाहिए है, ठीक है। तो वट एवर इज रिक्वायर्ड ओवर हेयर इज टू बी फेड फ्रॉम दिस कन्वर्टर. So first of all, we'll chalk out what is required, and the second of all, we'll see that how it is done. ठीक है, तो हम कन्वर्टर ऑपरेशन की बात इसमें थोड़ी सी करेंगे in the coming classes. Anybody wants to ask anything regarding the topic that is covered today? Anybody? चलो ठीक है then. Thank you.